हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज आम डेफिनेट इंटीग्रेशन रो थर्ड लेक्चर सुनिबा। या पूर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन रो दुईटी लेक्चर अपलोड हो सारी। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रो 4टी वीडियो, डिफरेंशिएशन रो 4टी वीडियो, प्रोबेबिलिटी, मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट रो 4टी वीडियो अपलोड हो सारी। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक रे आउ प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन गुडा आस। मो चैनल रो नुआ थी, मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, लाइक कर देबे और शेयर कर देबे। टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करिवे एंड व्हाइल जॉइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप ना देयर आर 3 टेलीग्राम ग्रुप्स, one for Maharashtra board and the second one for Odisha board and the third one also for CBSE board। कहीं ना मो चैनल रे तीनटी जाक बोर्ड पे वीडियोस अवेलेबल अछि, राइट। तो आपण निजर करस्पोंडिंग बोर्ड जोटा थियो, CBSE बोर्ड थिले CBSE बोर्ड, ओडिशा बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड, जोटा भी आपण देखिया करछ सेतरे जॉइन करे ताकि आपण PDF डाउनलोड कर पारिबे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेफिनेट इंटीग्रेशन रो प्रथम क्वेश्चन जो कि 2008 रे आस्थिला, राइट। So this is integration minus pi by 4 to plus pi by 4 x cube sin x। दिमाग गोटे ट्यूब लाइट अच्छे हमर जेतेबेले एमती टाइप रो लिमिट देखिबे माइनस a टू प्लस a और माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ये वाला प्रॉपर्टी आपन को मन पड़ियो। दिस इज द प्रॉपर्टी माइनस a टू a dx इक्वल टू 0 और 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx। 0 हो जेतेबेले फंक्शन हो ऑड, 2 times 0 to f of x dx when the function is even। Now to check odd and even function, consider f of x equal to the given function। Given function कौन अछि? x cube plus sin x। Now put x is equal to minus x, so this is equal to minus x का cube plus sin of minus x। minus x रो cube केते हिला? minus x cube and sin of minus x is minus sin x, so minus sign बाहर पड़ेला, this will be x cube plus sin x, right। So this is equal to minus of f of x। So f of minus x equal to minus f of x, that is f of x is an odd function। f of x is an odd function। जदि odd function होबो प्रॉपर्टी कौन कहूची, यार आंसर होबो 0। The answer of this question will be equal to 0, which was came in 2008। तो जेतेबेले आपनको माइनस a टू a फंक्शन दुसला, माइनस a टू a फंक्शन सब गोटे थर चेष्टा करिए देखिया को जो फंक्शन गिवन अछि से फंक्शन ऑड फंक्शन की। अगर ऑड फंक्शन रहियो तार आंसर 0 हो, इवन फंक्शन ले 2 टाइम्स 0 टू a हो, तापर इंटीग्रेट कर दे पारी, राइट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। 0 टू 2 3 minus 2x into dx। 3 minus 2x into dx। देखो 3 minus 2x रो वैल्यू केतेबेले 0 होबो? दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 3/2। x रो वैल्यू जेतेबेले 3/2 होबो सेतेबेले ये 0 हो जो। 3/2 पर कौन हो और 3/2 पूर्व कौन हो, से दुईटा जिनस देखिबार अछि। व्हाई? बिकॉज mod x will be equal to x when x is greater than or equal to 0 and will be minus x when x is less than 0, right। now ये जो 3 minus 2x अछि एटा नॉर्मली केमती हेबा दरकार? 2x minus 3 हेबा दरकार। जदि 2x minus 3 हेतांता तो आमे एठी 0 बाहर कर दिथांते। 0 केतेबेले होछि 3/2 रो, ता पूर्व नेगेटिव हेतांता, ता पर प्लस एठी पॉजिटिव, एठी नेगेटिव हेतांता। 3/2 पूर्व नेगेटिव हेतांता आ 3/2 पर पॉजिटिव हेतांता, किंतु एठी उल्टा फंक्शन दिया है। कोन दिया है? 3 minus 2x। तो बी केयरफुल, जदि वेरिएबलटा पर अछि, कांस्टेंटटा पूर्व अछि तो टिके सतर्क रहिबे। कोन करिवे? एटा को 0 टू 3/2 दुईटा इंटीग्रल रे आकु कन्वर्ट करिवे। प्रथम इंटीग्रल हे गेला आपनकर 0 टू 3/2। 3/2 माने that value of x where the function becomes 0। 3/2 plus 3/2 रू 2। नॉर्मली कौन हुए? 3/2 रे 0 हैला माने 3/2 पूर्व नेगेटिव हुए, 3/2 पर पॉजिटिव हुए। एबे कौन करिवे आमे? 3/2 पूर्व क्या काइना यार उल्टा फंक्शन अछि ना, 2x minus 3 नहीं कौन अछि? 3 minus 2x। तो जस्ट उल्टा हे जो, जोठी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव हे जो और जोठी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव हे जो। किंतु अपन केमती ट्राई करिवे देखो 0 टू 3/2 भितरे गोटे छोटिया वैल्यू नहीं ट्राई करिवे। टेक ए स्मॉल वैल्यू, सो 0 टू 3/2 भितर हमर गोटे वैल्यू हे गेला 1। 1 एटी पुट करंतु, देखो कोन होछि जेतले 1 पुट करिवे तो इंटीग्रेशन बिकम्स 3 minus 2। 3 minus 2 कोन हे गेला? 1 हे गेला, माने पॉजिटिव होछि। आ 2 जेतले पुट करिवे 3/2 टू 2 भितर गोटे वैल्यू 2 नियंतु, जेतले 2 पुट करछन्ती 3 minus 4 will be equal to -1। तो 0 टू 3/2 भितर ए जिनसटा पॉजिटिव होछि। नॉर्मली कोन हेबा कथा? नेगेटिव हेबा कथा, काइना फंक्शन उल्टा अछि। तो एठी कोन होछि? जदि 3 minus 2x रहिबो
2x minus 3 ଥିଲେ 3/2 रे 0 होची तो 3/2 पूर्व पॉजिटिव नेगेटिव होबो 3/2 ପରେ पॉजिटिव होबो जदि 3 minus 2x रहिला जस्ट उल्टा हे जो जोठी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव जोठी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव तो 0 to 3/2 रे पॉजिटिव होबो दैट इज 3 minus 2x and 3/2 root 2 रे एटा नेगेटिव पार्ट ता सो दिस विल बी माइनस ऑफ 3 minus 2x यही स्टेप टा होची इंपोर्टेंट स्टेप या पर नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन 3 into 1 रो इंटीग्रेशन हेगला x minus 2 into x रो इंटीग्रेशन होची x square upon 2 and this is from 0 to 3/2 this is from 0 to 3/2 then plus minus 3 हेगला माइनस बाहर अछि माइनस भितरु नै जो minus 3 into 1 रो इंटीग्रेशन हेगला x minus minus हेगला plus 2 into x रो इंटीग्रेशन हेगला x square upon 2 and within the limit 3/2 to 2 now value put करंतु 3 into ये 2 तो कैंसिल कर दो ये 2 को 80 कैंसिल कर दो x जगह 3/2 सब्स्टिट्यूट करियो 3 into 3/2 minus 3/2 रो स्क्वायर which is equal to 9/4 अपर लिमिट हेगला माइनस जेतेबेले x को 0 करियो 0 minus 0 then plus x को 2 लिखिबे minus 3 into 2 plus 2 square will be equal to 4 this is your upper limit minus 3 into 3/2 plus 3/2 रो square which is equal to 9/4 so this is equal to 9/2 minus 9/4 एटा तो 0 हेगला लिखिबा दरकार नै this is minus 6 plus 4 which is minus 2 and minus of minus will be plus 9/2 minus of minus will be minus 9/4 correct 9/2 minus 9/4 9/2 minus 9/4 is equal to 9/4 9/2 minus 9/4 is also equal to 9/4 चेक कर देखो एलसीएम 4 कर दे so 2 रे मल्टीप्लाई है जो 18 minus 9 will be 9 divided by 4 8 भी 9/4 minus 2 9/4 plus 9/4 will be 18/4 18/4 minus 2 18/4 माने 9/2 9/2 minus 2 so 9 minus 4 will be 5/2 and this is your answer this is came in 2007 एक मार्कर क्वेश्चन अछि किंतु एतर बहुत सिखिया जिंस अछि देखो जदि x minus 1 रहला मोड भितरे वेरिएबल आगे अछि तो जदि इंटीग्रेशन 0 to 2 देला कोन देला 0 to 2 1 रे 0 होछि तो जतले x को 1 करिवे फंक्शन रो वैल्यू 0 होछि ना तो 1 to 2 0 to 1 हेगला 1 to 2 हेगला 0 to 1 भितरे कोन हबो नेगेटिव आ 1 to 2 भितरे पॉजिटिव जदि एटा 1 minus x हेगला जस्ट उल्टा जोटी नेगेटिव होतला सेठी पॉजिटिव जोटी पॉजिटिव होतला सेठी नेगेटिव राइट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन -1 to +1 mod x plus x the whole square now सेम कंसेप्ट रे जिबा -1 रो 0 काहे ना ये जो mod x ता 0 पर पॉजिटिव होची 0 पूर्व नेगेटिव होची तो -1 रो 0 plus 0 रो 1 जेतले -1 रो 0 रखियो mod x will become -x and this is plus x the whole square 0 to 1 भितर mod x will become x plus x the whole square this into dx and this into dx so -x plus x cancel हो गया 0 -1 to 0 0 into dx so this will become 0 x plus x will become 2x 2x रो स्क्वायर हेगला 4x स्क्वायर 0 to 1 4x square into dx so this value is equal to 0 4 constant बाहर बाहर कर दे x square रो इंटीग्रेशन x cube by 3 and from the limit 0 to 1 so this is equal to 4 into 1 by 3 minus x को 0 लिख ले तो 4 into 1 by 3 and this will be equal to 4 by 3 and here is your answer correct so this was came in 2005 exam astila 1 mark correct 1 mark question next one more question is integration 0 to pi by 2 5 into sin cube x divided by sin cube x plus cos cube x 0 to pi by 2 देखो जेतल 0 to pi by 2 रहो भितर sin x cos x रो फंक्शन रहो या tan x cot x रो फंक्शन रहो या sec x and cosec x रो फंक्शन रहो either the function is of sin and cos or tan and cot or sec or cosec ए केस रे pi by 2 रे at pi by 2 sin will become cos and cos will become sin tan will become cot and cot will become tan sec will become cosec and cosec will become sec तो हमने स्टार्ट कैसे केमती करिवे प्रॉपर्टी यूज करिवे 0 to pi by 2 x will be replaced as pi by 2 minus x sin cube pi by 2 minus x divided by denominator is also sin cube x will be replaced by pi by 2 minus x plus cos cube x will be replaced by pi by 2 minus x into dx so this is equal to integration 0 to pi by 2 here is 5
Sin pi by 2 minus x will be equal to cos x. So this will be cos cube x divided by sin cube pi by 2. So this is your cos cube x plus cos pi by 2 minus x is sin x and the cube sin cube x into dx. Now देखिए एटा 1 इक्वेशन कर दो एटा 2 इक्वेशन कर दो दुईटा जगह डिनोमिनेटर सेम अच्छी. नाउ एडिंग 1 and 2 दुईटा जगह इक्वेशन को ऐड कर दो एडिंग 1 and 2 जो दुईटा जगह इक्वेशन ऐड करिवे लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम i plus i plus i केते गेला 2i राइट साइड रहेगा 0 to pi by 2 5 into sin cube x plus this is your equation 1 ये टर्म में सेट 5 into sin cube x plus 5 into cos cube x divided by the denominator same अच्छी sin cube x plus cos cube x into dx. Now take 5 from the numerator. 5 the common नहीं दिया. So this is equal to 0 to pi by 2. Numerator becomes sin cube x plus cos cube x and the denominator also the same. That is sin cube x plus cos cube x into dx. So this will get cancelled. It cancel है 1 है 1 रो integration है x and from 0 to pi by 2. 1 from 0 to pi by 2. So this is 5 into pi by 2 minus 0 and that is equal to 5 times pi by 2. But this is the value of 2i. हमको कौन दरकार i 2 रे डिवाइड करते हैं 5 pi 2 by 2 will be equal to 4. So this is your answer. Correct? एटा हो जाए आंसर i equal to 5 pi by 4. एटा गोटे 4 मार्क रो क्वेश्चन आइतला and that is came in 2007 exam. बुझियो छी. नेक्स्ट क्वेश्चन करबा. एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन किंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. बहुत गुडा एंट्रेंस एग्जाम रो मते यार जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होची जेई रे सेटा यूज होची. एटा डायरेक्ट आसीबोनी. एटा बुलाई बांकी के आसीबो राइट. बहुत गुडे स्टैंडर्ड एग्जाम रे यूज होची. नाउ कंसीडर दिस एज i. या को हम i कंसीडर कर देले. आउ 0 to pi by 2 होची. सेति में sin x जगह हम कोन लिखबा pi by 2 minus x. Sin of pi by 2 minus x. Now this will become cos x. So this is equal to integration 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x will be equal to cos x. Let this will be your equation 1 and this is your equation 2. Now adding 1 and 2. Adding 1 and 2. So जेतबे ए दुटा को ऐड करिवे लेफ्ट हैंड साइड will become 2i and the right hand side will become 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x, right, into dx. So log m plus log n will become log of m into n. 0 to pi by 2 log of sin x into cos x, right. Now sin 2x रो फॉर्मूला होची 2 sin x into cos x. सेटा हमको क्रिएट करिवार अछि. तो कोन करिया 2 रे मल्टीप्लाई कर दबा 2 रे डिवाइड कर दबा. So this will be equal to log of numerator कौन थिला sin x into cos x थिला. So multiply कर देबे 2 रे और divide कर देबे 2 रे. This into dx. So this is equal to integration 0 to pi by 2 log of 2 sin x cos x will be equal to sin 2x divided by 2. This into dx. Now this is in the form of log m by n. So write it as log m minus log n. So this is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x into dx minus integration 0 to pi by 2 log of 2 into dx. Okay. Now 8 देखो तो sin 2x है हमको दरकार x sin x और cos x. जब sin x हो सीधा i बन जो cos x है मतलब that will become i. 8 2x होचे तो put 2x equal to t. 2x को कौन करिया t put करिया 2 into x रे derivative 1 into dx equal to dt. Now dx will be equal to dt by 2. dx will be equal to dt upon 2, right. Now when x is equal to 0, x को जतले 0 put करिवे t is also equal to 0. Now when x is equal to pi by 2, जतले x को pi by 2 लिखिवे 2 into pi by 2, 2 into pi by 2 will be equal to pi. So when x is equal to 0, t will be 0. When x equal to pi by 2, t will be equal to pi. अभी आपको चेंज कर देगा 1 second ना. हाँ 8. Now this is equal to, therefore 2i is equal to integration 0 रे 0 pi by 2 रे pi log of sin 2x. 2x will be t into dx will be equal to dt upon 2 minus ये जो सेकेंड इंटीग्रल अच्छी ए3 log 2 आपनकर कांस्टेंट log 2 taken outside
dx रो इंटीग्रेशन हे गला x within the limit 0 to pi by 2. Okay, so this is equal to integration कौन करिवे 0 to pi कर देबे आकु pi by 2 करिवे आकु 2 करिवे गोटे प्रॉपर्टी अछि 0 to 2a f of x dx equal to 0 to a f of x dx into 2 times काहे ना जतले t जगह रे आपण कोन पुट करचंती pi minus t f of x जगह f of a minus x करिवे जदी फंक्शन सेम रहला f of x जगह a minus x करिवे जदी फंक्शन सेम रहला तो 2 times 0 to a by 2 हो जे माने 0 to pi अछि सेटा 0 to pi by 2 हो जे and this will be equal to log of sin t into dt upon 2 minus log 2. Now upper limit is pi by 2, lower limit is 0. Now this 2 and this 2 will cancel. Now this 0 to pi by 2 log of sin x is nothing but your I. That is nothing but your I. So this value will be equal to I would property use कर दियो 0 to pi by 2 जदि लिमिट को सेम रखिवे you can change the variable so instead of t you can write x also minus pi by 2 log 2. So this is equal to I minus pi by 2 log 2 and the left hand side becomes 2i. I को left hand side को नहीं जानते 2i minus I will be equal to I equal to minus pi by 2 log 2. माइनस साइन जब बाहर करियो अछि कोन करिवे pi by 2 log of 2 raised to minus 1 is so this is equal to pi by 2 into log of 1 by 2. So either you remember this या तो a standard result मन रखन or you can remember this एटा जेई रे स्टैंडर्ड रिजल्ट भाबरे यूज केते सम आसीबो सेठी log sin x रो फार्मूला पूरा जदी लिखिबे सम बहुत लंबा आइबो सेठी हम कोन करिया एटा एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट मन रखिया. So what are the standard results? The standard results are 0 to pi by 2 log of sin x into dx is equal to integration 0 to pi by 2 log of cos x dx equal to minus pi by 2 log 2 and cosec aus x जदि हला 0 to pi by 2 log of cosec x into dx or integration 0 to pi by 2 log of sec x into dx will be equal to plus pi by 2 log 2. और जो tan x हला या cot x हला then answer is 0. log of tan x ये tan और cot हमको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाउछ 0 to pi by 2 log of cot x dx both will be equal to 0. Tan x 0 to pi by 2 log tan x and 0 to pi by 2 log cot x both will be equal to 0. So these are the important, all are important. ये सब हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भाबे यूज करिए राइट. तो मो चैनल रे जदि नुआ अछन मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबे. टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करी पीडीएफ को डाउनलोड करबो चेष्टा करिए. टेलीग्राम ग्रुप को टिके देखि जॉइन करिए काई ना तीनटी टेलीग्राम ग्रुप अछि महाराष्ट्र बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एंड ओडिशा बोर्ड राइट. तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन रो फोर्थ वीडियो नै कि आसी आ गोटे आ केते इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ केते इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ केते स्टैंडर्ड कांसेप्ट्स आ से जति बेले पर्यंत मो चैनल देखु तांदु प्रिपेयर करतांतु एग्जाम पे. गुड लक.